Hey, hi everyone. Please let me know if I'm audible. My screen is visible. We're going to start. Sorry, I was busy with some other meeting. So, guys, anyone have any doubt or question before I get started with PIG in detail? Any question? किसी को कोई error आ रहा हो, कोई issue? Okay. So, in case you have any questions, you can ask in between. But we are getting started with PIG further. Yeah, Gulzar, tell me. Okay, Gulzar. So if you look at my screen, right, at the top there is this browser. This symbol is for the browser, Gulzar. You can open this browser. By default browser ये open हो भी जाता है. अगर आप कभी भी Cloudera पे login करते हैं, तो ये browser by default login हो जाता है. और यहाँ पर ये Hue का जो option है, बस आपको इस पे क्लिक करना होता है. That's it. बट अगर ये ब्राउजर आपका बाय डिफॉल्ट नहीं खुल रहा है गुलजार, तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं. ठीक है, और वहां पर फिर आपको ये ह्यू का ऑप्शन दिखेगा. दैट्स इट. उसमें यूजर नेम पासवर्ड होता है आपका क्लाउडेरा. ओके गुलजार, ट्राई इट. सो यू हैव दिस ऑप्शन गुलजार टू ओपन ह्यू. परफेक्ट. ओके. अब आप वैसे ह्यू को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज रियल वर्ल्ड में हमें ह्यू नहीं मिलता है. हमें हाइव या इम्पाला को कमांड लाइन से ही एक्सेस करना चाहिए. ठीक है. ओके विपुल. तो डेफिनेटली हाइव में अभी बहुत चीज़ें हैं. अभी हमें हाइव में एसक्यूएल के एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी करने हैं. ठीक है. तो हाइव अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. बट द पॉइंट इज कि मैं मतलब अभी हाइव से आगे बढ़ रहा हूँ, सो दैट आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि हाइव का ऐसे कोई एंड नहीं है. इट्स एंड टू एंड एसक्यूएल. बट मैं आपको लिंक्ड चीज़ें पैरेलली बता रहा हूँ. आई विल कम बैक टू हाइव अगेन. ओके विपुल. नो निष्ठा, आई थिंक आप लोगों का एसक्यूएल हो चुका है ना. गाइस एसक्यूएल आप लोगों का हो चुका है या नहीं? किसी और ने एसक्यूएल करवाया है मेरे से पहले? गाइस यस और नो. हाँ, तो वो बेसिक्स इज इनफ. यस दैट बेसिक्स इज इनफ ऑफ माई सीक्वल और एसक्यूएल. उसी के ऊपर मैं आपको जो भी हैं हाइव में कमांड्स करवाऊंगा. ठीक है. अ, तो कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स जैसे मैंने आपको बोला था ना, एनालिटिकल क्वेरीज वगैरह, वो मैं आपको करवाऊंगा. रैंक, रो नंबर, डेंस रैंक, वो सब. नहीं, सैस टैब्लो मेरा नहीं है गाइस. सैस टैब्लो समवन एल्स. ओके. तो हम हाइव में ही अभी एसक्यूएल की एडवांस चीजें करेंगे, बट उससे पहले आप लोग हाइव में जो आपको एसक्यूएल आता है जिस लेवल का, एटलीस्ट उतना प्रैक्टिस आप कर लो, जिससे कि आप लोग हाइव से कंफर्टेबल हो जाओ. और जो मैंने कल बताया था आपको कि इंटरनेट से कोई डेटा आपने डब्ल्यू गेट किया, उसको पुट किया एचडीएफएस पे, टेबल बनाया, क्वेरी किया, ये एंड टू एंड लाइफ साइकिल आपको आनी चाहिए. या फिर स्कूप जो हमने किया था, स्कूप से डेटा एचडीएफएस में डालना, एटलीस्ट इन चीजों की प्रैक्टिस करो आप पहले. ठीक है, ये छोटे छोटे टूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर आप इम्पाला पे प्रैक्टिस करो. इम्पाला और हाइव सिमिलर है, राइट. बस इम्पाला में मैंने बताया कि वो एक एमपीपी सिस्टम है जो मेमोरी ज़्यादा लेता है. ओके. उसके अलावा कल हमने पिग स्टार्ट किया, तो अब हम थोड़ा पिग के बेसिक्स देखेंगे आज. ओके. इट्स ऑल अबाउट एनालिटिक्स. तो यू कैन डू इट थ्रू पिग, यू कैन डू इट थ्रू एनी वे. ओके.
So now what we are going to do, guys, start the pig, and we are going to run some analytics on the pig. Yeah, Nishtha, tell me. Guys, can anyone ping me कल वाला query जो हमने pig में data load करने के लिए किया था? Do anyone remember? It's like A equals to load and then within single quotes the path, right? Can anyone ping me that command? Nishtha, yes, tell me. If it's a long question, you can just ping me or speak, Nishtha, instead of typing. Sir. Yes, tell me. Sir, actually, we have a number of projects that need to be done on Python and Hadoop. So you can. Which project on? Let's talk about Hadoop, not Python. Okay, because I'm not teaching you Python, right? I told you Yes. in this class I'm not going to talk about Python and machine learning. Okay. 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 Here we are only going to talk about big data Hadoop. So yeah, so what about the Hadoop project? Can you give me an example? Yes, sir. So we have two projects: airline trends and revenue management in Hive, and second project is customer segmentation in Spark. So we will be doing. स्पार्क तो अभी हमने किया नहीं है ना, लेकिन हाइव की जब आप बात कर रहे हो तो वो आपका एलएमएस में प्रोजेक्ट है? Yes, sir. Sir, these two, both of them are LMS projects. हाँ, very good, very good. So my point is कि you try your own, right? Like, and tell me what's the issue. Can you tell me what is the project about? Before I help you doing that, I want you to do it. Like, it must be talking about downloading some data, loading it like we did yesterday, and creating a Hive table, internal, external table, and doing it, right? So my point is, जितना आप कर सकते हो उतना करो. सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, एंड वेरी गुड दैट निष्ठा यू ब्रॉट इट अप. जितना आप लोग कर सकते हो, एंड देन एक दिन हम उस प्रोजेक्ट को करेंगे. लेकिन एकदम से मैं फ्रेश प्रोजेक्ट उठाऊंगा ना, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आधे लोगों ने उसको कभी पढ़ा ही नहीं होगा, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. तो प्लीज गाइस ट्राई इट वंस. नेक्स्ट वीक मैं उस प्रोजेक्ट को उठाता हूँ और फिर मैं उसको एंड टू एंड करूंगा. ओके Sir, but it's not in our element. It's actually we were given a booklet, so it's written in the booklet that we have 9 projects. So it's one of those. उसमें कोई details नहीं लिखी हुई कि how. It's just बस नाम लिखा हुआ है प्रोजेक्ट का. मैं वही कह रहा हूँ, आप एलएमएस में देखिए, अगर एलएमएस में आपको कोई डिटेल मिलता है तो इट्स गुड. अदरवाइज टेक द उसका स्क्रीन कैप्चर करके मुझे ग्रुप पे भेज दो. लेट मी लुक इनटू इट. जो आप कह रहे हो ना, कंटेंट है आपके पास, तो प्रोग्राम शेड्यूल इज वन थिंग, बट चेक इफ इट इज ऑन एलएमएस. एलएमएस में जो भी प्रोजेक्ट है ट्राई इट आउट, और जहां तक कर सकते हो उसके आगे मैं करवा दूंगा उसको नेक्स्ट वीक, ठीक है, स्क्रैच से. बट माई पॉइंट इज ट्राई इट वंस. मुझे एक बार फोटो भेज देना उसका आप, ठीक है. But yeah, thanks for bringing it, Nishtha. But everything is related to what we are doing here. अगर आपने ये सही से कर लिया वो भी हो जाएगा, ठीक है. I'll help you doing that. Okay, anyone, any other question? So yeah, Vipul, perfect. We will do it. This analytics and reporting using Hive. That's why we are not done with Hive. Okay. So let's move ahead and now let's see what all we can do in Pig. क्या वो सारा काम जो हम जावा मैप रिड्यूस में या फिर हाइव में कर सकते हैं, क्या हम वो सारा काम पिग से कर सकते हैं? डेफिनेटली यस, वी कैन डू इट. गुलजार, क्वेरी एडिटर कमांड्स डिस्प्ले हाउ? आई डिडंट गेट इट. जो कल
में आपने किया था तो मेरा तब चल नहीं रहा था, क्लाउड रहा, तो उसमें ह्यू के टॉप में एक यहाँ क्वेरी के साथ कोई जो लेफ्ट टू राइट जो कमांड्स की लिस्ट पे लिखी आ रही थी, ऐसी कुछ। नहीं तो गुलजार देखिए, अब आपको ना फिर से ये खुद से स्क्रैच से ही सब करना पड़ेगा। जो भी मैंने कमांड्स कल पिंग की थी वो या तो अपनी क्लास में किसी से मांग लो, मतलब I shared it on the group, right? All the commands and all. So you can ask someone in the team, but let me share one second. I may not have every command, but yeah, मैंने ये भेज दिया है, इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेना। मैंने यहाँ से निकाल के भेज दिया है गुलजार। हमने क्या मतलब टेबल हाँ, बनाया था, क्या डिस्क्राइब किया, क्या सिलेक्ट किया, वो मैंने आपको यहाँ से निकाल के भेज दिया। थोड़ा फॉर्मेट कर लेना उसको, ठीक है? ये ठीक है। एक्चुअली हाई एडिटर को डिस्प्ले कैसे करना है, यही पूछ रहा था। हाइव का कोड कैसे डिस्प्ले करना है? यहाँ लेफ्ट मोस्ट साइड पे जो हाई एडिटर जो लिखा हुआ है, और ये ऊपर से आएगा ना गुलजार, क्वेरी उसके साथ एडिटर। ये रहा, ये यहाँ क्लिक कीजिए ना आप। ऐसे ट्राई किया अभी, हाँ हाँ, ऐसे हो करता जाएगा हूँ। हो जाएगा, वो आ जाएगा, ठीक है। सर एक्चुअली इसमें हाई ऑप्शन नहीं आ रही, सिर्फ एडिटर, डैशबोर्ड और शेड्यूलर आ रहा है। नहीं नहीं, सर उसमें ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना पड़ेगा ना, आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना पड़ता है गुलजार। सर एक्चुअली मैंने एडिटर में जाके हाई पे गया अभी। हाँ, अगर यहाँ तो से नहीं हो रहा है गुलजार, डोंट डू इट। मैं आपको डायरेक्ट लिंक पिंग कर रहा हूँ, ये लो, ये वाला लिंक ओपन करो, खुल जाएगा। डायरेक्ट इस लिंक को ब्राउजर में खोलो आप, वो हो जाएगा, ठीक है। गुलजार हो गया क्या? तो गुलजार आप यहाँ से मत एक्सेस करो अगर नहीं चल रहा है। हो सकता है आपका कुछ नेट का इशू, नेट नहीं सॉरी, मेमोरी इशू हो, कुछ सिस्टम में इशू हो। यू कैन एक्सेस थ्रू द कमांड लाइन ना। आपको तो हाई फ्री प्रैक्टिस करना है ना। यू, मैं वही कह रहा हूँ, यू तो अवॉइड ही करना चाहिए। मैं पहले से यही कह रहा हूँ। हाइव को आप कमांड लाइन से एक्सेस कर लो। ओपन दिस थिंग एंड टाइप इन हाइव, यू कैन डू एवरीथिंग हियर। समझ गए? एक्चुअली तो वो कमांड लाइन यही है जो आपने अभी चैट्स में डाली है। गुलजार मैंने चैट में जो डाला है वो तो ब्राउजर का यूआरएल है ना। तो ठीक है। आपको मैं बोल रहा हूँ टर्मिनल पे, यहाँ पे जाओ आप, ठीक है? टर्मिनल पे जाओ, यहाँ क्लिक करो, ठीक है? और वहां से आप उसको एक्सेस करो प्लीज। यहाँ पे हाइव टाइप करो, बस यहाँ पे आप हाइव टाइप करेंगे हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सेस करके देखो एक बार, चल रहा है क्या? गुलजार प्लीज लेट मी नो इफ इट इज डन। ब्राउजर से नहीं चल रहा है तो लीव इट, हाइव से एक्सेस ऐसा करो चल रहा है आपका। मतलब। और सर एग्जीक्यूशन का कमांड क्या होगा इसका? एग्जीक्यूट क्या करना है आपको? आपको उसके अंदर वो लिखना है ना, कोई भी अपना एसक्यूएल लिखोगे ना इसके अंदर, तो आप एग्जीक्यूशन कमांड तो कुछ होता ही नहीं है, आपका एसक्यूएल होता है। आप एसक्यूएल जब टाइप करेंगे वो एग्जीक्यूट होगी। तो कमांड लिखो एंटर से हो एग्जीक्यूट। जाएगा। हाँ बस। ठीक है, थैंक यू सर। वन सेकेंड गुलजार।
हरे कृष्ण। Okay, guys. Okay, Gulzar. So you will be able to access Hive from the terminal, Hive from the browser, whichever way you want. There are multiple ways. So now I have pinged you the queries also, Gulzar. Go through them. देखिए अभी आई एम पिग वेयर पिग में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पिग भी एक एनालिटिक्स टूल है, जैसा मैंने कल बताया। इसकी कमांड्स बड़ी बेसिक लेवल की हैं। आपको एक फाइल दी गई, आपने लोड करी, ये जो बना वेरिएबल इसको हम बैग कहते हैं। बैग मतलब लाइक टेबल, जैसे एसक्यूएल में हाइव में एक टेबल होती है, यहाँ उस टेबल को बैग कहते हैं। और टेबल के अंदर जो रोज होती हैं यहाँ उनको टपल्स कहते हैं। तो बैग और बैग के अंदर टपल्स, बस सिंपल। तो अब आपको अगर इसको देखना है तो मैंने बताया था इसको आप डंप करेंगे तो आप डंप कर सकते हैं। बट अगर आप डंप नहीं करना चाहते तो देर इज वन मोर कमांड विच इज लाइक स्टोर। स्टोर कमांड देखो डंप क्या करती है, वो इस बैग का कंटेंट आपको स्क्रीन पे दिखाती है। लेकिन आप ऐसा सोचो, आपने बहुत सारा एनालिटिक्स करा और उसके बाद कोई बैग है जिसको आपको एचडीएफएस में फाइल के रूप में सेव करना है। मतलब इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको एचडीएफएस में सेव करनी है। तो आप स्टोर करोगे, स्टोर दिस इनटू स्टोर बैग ए इनटू you can give some output file name here. Let's say pig data. Okay, I'm saying it's pig data. So that means I am storing the variable or bag A's data in a file on HDFS. So pig data नाम का मेरा एक फोल्डर होगा, उस फोल्डर के अंदर मेरा फाइल बन जाएगी। pig data नाम का एक फोल्डर रहेगा। So let's enter it. So now it's dumping the data in HDFS. But earlier it was dumping the data on the screen. ठीक है, now it's running a map reduce job, but this time it's storing the data in HDFS. So let's see, go in the HDFS and see. So what I will do HDFS DFS -ls और वो जो भी पाथ मैंने वहां पे डाला था ये वाला। Let's see if we have any data inside this. Sorry, I gave test.csv. It should be big data. It's running the map reduce. तो अभी क्या हो रहा है, वो वेरिएबल का डेटा आपका डंप हो रहा है। ओके
Okay, it's taking some time. So Tanya, you can first create that bag and then you can like पहले आप बैग क्रिएट करेंगे और उसके बाद उस बैग को आप लोड कर लेंगे और उसके बाद जब वो बैग लोड हो जाएगा डेटा से तो आप उसको स्टोर कर दोगे अपने HDFS में. तो अब हम देख रहे हैं कि HDFS में क्या ये फोल्डर बन गया है और अगर बन गया है तो क्या इसके अंदर वो डेटा राइट हो गया है. सो वी आर गोइंग इन HDFS नाउ. So guys, if you look at it's done, this folder is created, big data, and in that there is a part file, and we know now the part file is m matlab mapper, and one mapper execute. That's why only one part file, and underscore success says that your map reduce job is successful. So this is how your two files will be there. One is the successful file, one is the part file which contains the actual data. Okay. Here, if you look at the job is completed, the job is completed successfully. This is your job. The map reduce job is a successful job. It successfully read some records like 419 records from this path, right? From this path, we read the records to create that bag. And then this is the path where we have written the data. So this is where the output is. So input, output, everything is being mentioned here. This is the input file and this is the output file. Total number of records that processed was 419 and total bytes were 28,000 bytes of data was processed, right? So all this information is being present here. Guys, please let me know if everyone is able to complete this and see this data. Guys, please let me know if it is running or someone is facing any issues or error. Please let me know. ओके प्रगिशा, परफेक्ट. मीनवाइल प्रगिशा, आप पीछे ये वाली कमांड चलाइए एक बार HDFS DFS वाली, क्योंकि कई बार जब जॉब चल रही होती है मैप रिड्यूस की तो फोल्डर बन जाता है, एम्प्टी फोल्डर दिखा रहा होगा आपको. प्लीज रन दिस क्वेरी. Okay, Pragisha, that's fine. You can wait. Okay, Tanya, thanks a lot. Other guys, please let me know.
How to get back to the minimized file in virtual machine? Minimized file. It's Alt tab, people. You have to try Alt tab, and that file will appear if it's minimal. Try it, people. राहुल, देखो यहाँ कोई टेबल का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता ना, तो ऑल्टर टेबल वगैरह हाइव वाइव का तो कोई पॉइंट ही नहीं है. आप पिग में हाइव के टेबल्स एक्सेस नहीं कर सकते. पिग कैन नॉट लाइक directly it cannot access the hive tables, so you cannot alter them. Pig does not take care of tables. It creates its own bags. पिग में कोई स्टोरेज नहीं होता, मतलब हाइव तो स्टोर करता है ना डेटा, पिग कोई डेटा स्टोर नहीं करता. पिग इज जस्ट फॉर एनालिटिक्स. पिग कैन नॉट स्टोर एनी डेटा लाइक हाइव. पिग में आप सिर्फ एनालिटिक्स करो और जो फाइनल आउटपुट है उसको एचडीएफएस में डंप कर दो बस, जैसे कि अभी हमने किया. मतलब मानो कि आपके पास एक फाइल है, उस फाइल पे आपने कुछ फिल्टर डेटा को फिल्टर किया, कुछ कॉलम्स को रिमूव किया, तो फाइनल जो आपके पास बैग बना, उस बैग को आप एचडीएफएस में डंप कर सकते हो. तो पिग डज नॉट हैव एनी स्टोरेज ऑफ इट्स ओन. Okay, and pig cannot access or alter the hive or impala tables. Definitely good point, Vipul. The point is because pig is a part of big data world, it's good to know about it, because what happens in some of the companies, मान लो आप किसी कंपनी में गए जहां पर जो लॉजिक है वो पिग में चल रहा है. Okay, logic is in pig and they ask you to convert it into hive. So if you don't know about pig, you cannot convert the pig's logic into hive logic. Okay, Vipul? Or they ask you to convert this pig logic into Spark logic. So how will you do that unless you don't know what pig is, right? Because पहले तो कंपनियों ने पिग वगैरह जैसे टूल्स पे भी बहुत ज्यादा काम किया, अब नहीं कर रहे, अलग बात है. तो मान लो आपको ये काम करने को मिल गया ट्रांसफॉर्म करने का, तो you have to be aware about pig also. Okay, but pig also runs MapReduce at the back end. Okay. Okay. तो गाइज अभी तक हमने देखा कि बैग कैसे बनता है, बैग को डंप कैसे किया जाता है, उसको स्टोर कैसे किया जाता है एचडीएफएस में. अब हम इस पे कुछ एनालिटिक्स करेंगे. तो एनालिटिक्स करने के लिए पहले हमें पिग के बारे में जानकारी होनी चाहिए. मतलब बैग, जो आपने बैग बनाया, आपने बैग बनाया of the name A, so we will describe it. Let's describe A. What happened? Describe A. Schema for A is unknown. Okay, perfect, very good. तो गाइज अभी क्या हुआ ना, देखिए अभी मैंने एक बैग बनाया. अब अगर मैंने कोई बैग बनाया तो मुझे उस बैग के ऊपर कुछ एनालिटिक्स करना है. मान लो, तो मुझे पता होना चाहिए ना बैग में कॉलम्स कितने हैं. मान लो इस बैग के अंदर जो टाइटैनिक का डेटा है उसमें 10 कॉलम है, मुझे उसमें से किन्हीं 2 कॉलम्स पे एनालिटिक्स करना है. तो मुझे इसका स्कीमा तो पता होना चाहिए. तो मैं डिस्क्राइब करूंगा ए को, तो उसका स्कीमा मिल जाएगा. बट वो कह रहा है कि भैया मुझे स्कीमा ही नहीं पता ए का. अब स्कीमा नहीं पता तो दैट्स अ प्रॉब्लम. लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. देयर इज अनदर कमांड नोन एज explain द बैग. जैसे हम डिस्क्राइब करते हैं किसी बैग को तो हमें उसका स्कीमा मिल जाता है. यहाँ पर हमें स्कीमा नहीं मिला, वो है.
The another thing is you can explain a bag. By me, what do you mean by explaining a bag? You mean कि उस बैग के पीछे जो भी कंप्यूटेशन है, राइट, उस बैग में कोई एनालिटिक्स है कि नहीं, तो क्या एग्जीक्यूशन प्लान है उसका. तो बैग इज गोइंग टू लोड डेटा फ्रॉम दिस पाथ. तो whenever you explain a bag, it will explain everything about that bag. मतलब कि ये इस लोड कमांड से बना था, ये किस पाथ को पॉइंट कर रहा था, all those things are available here. ओके. उसमें मैप रिड्यूस चलेगा, तो मैप रिड्यूस कहाँ से फाइल रीड करेगा, that is one thing. There is one more command known as illustrate. So there are three commands: describe, explain, and illustrate. Now let's see what happened in illustrate. Illustrate command did not work here because there is no schema. Please provide a schema while loading the data. अब ये स्कीमा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है यहाँ पे कि भैया स्कीमा चाहिए, स्कीमा चाहिए. तो आखिर स्कीमा आएगा कहाँ से? आप अगर देखेंगे तो हमने एक लोड कमांड चलाई थी शुरू में. Let me explain you. Copy this. Okay. Paste it. Okay guys. So pig में जब हम एज ए एडवांस यूजर काम करते हैं तो whenever we are loading a file, we need to give the schema. Like we have to say while you are creating this bag, जैसे हाइव में होता है, राइट, you need to give schema while creating a table. Here also you have to give schema while creating a bag. So as now here we will give that entire schema. But I don't know the schema, right? So कल वाली जो हमारी ये कमांड थी, ये schema है, right? This is the schema. Copy this. So guys, this is the schema, right? So this is the schema, passenger ID and all. Now here in pig we don't have string, we have something known as character array. We have something known as character array, char array. Okay, so passenger ID is an integer, so we will keep it as integer. Passenger class was also integer, we can keep it as integer. But जहां जहां string है वहां हम क्या लगते हैं? pig में character array होता है, pig में string नहीं होता. We have character array. So convert everything to character array. Okay, string जहां जहां है वहां होगी array of characters. और बाकियों में हमने integer दे दिया, simple. So now I paste that schema here and enter. Okay, there is one more thing. Here we have to give schema like this, colon. We have to give schema like this. That name is of the type this, gender is of the type this, age is of the type this. So we don't give space, rather we give colon. It's just the syntax, guys, so no actual logic behind it. It's just the schema, how to create the schema in pig. Okay, that's it. Copy and paste it. So I'm pinging you the command. Please try that.
So this is the final command where while loading the data file in a pig bag, you also need to give the schema. Okay, remember that schema is mandatory. Otherwise आप अपनी analytics नहीं कर पाओगे. Now, if you look, guys, I loaded the same file, but this time I have given the schema. So now if I describe A, see, this time it gave me the schema. Earlier it was saying schema unknown. Huh? Schema was not known. So please do that. Yeah, Tanya, sure. So always make sure whenever you are working with pig and you are loading a file, you need to give the schema. Otherwise, pig will not be able to identify the schema. Here for string, just replace it with char array, and it's like a key value pair, like the column name and the data type, column name and the data type, like this. Okay. Guys, please let me know if you are able to do it. Gomini, Aditi, Rahul, Vipul, Anishtha, Karan. Please let me know if you are able to load a bag in pig with the schema and then you are able to describe it. एक चीज और याद रखना कि लोड कमांड चलाने का मतलब ये नहीं है कि बैग में डेटा लोड हो गया है. पिग इज वेरी लेजी, जैसे पिग्स होते हैं ना, दे आर वेरी लेजी. जब आप एक्चुअली डेटा डंप करने को बोलोगे या जब डेटा को स्टोर करने को बोलोगे, तभी वो एक्चुअली फाइल रीड होती है. उससे पहले पिग जो है बड़ा ही लेजी है, और यही चीज आपको स्पार्क में काम आएगी. पिग का जो लेजी इवेल्युएशन है, वो लेजी इवेल्युएशन ही स्पार्क ने यूज किया. ओके, सो पिग इज having influence on various areas. It does not read the file immediately. Okay, Vipul. Okay, Pravisha. Okay, Nisha. So Tanya, should I proceed? Okay. So now, guys, if you are able to create, if you look at create a bag with schema, correct, and then you are able to describe it. That okay, since the file contains multiple records, you want to iterate over the records. So we have a command known as for each a generate a generate let's say only passenger ID. Okay, that's it. इसका मतलब क्या है गाइज, आपका जो बैग है उसके अंदर मल्टीपल रोज हैं, तो आपको इन रोज के ऊपर एक लूप चलाना है. तो इन दिस बैग आई वांट टू जनरेट सम आउटपुट. इट इज लाइक select star from a table. You do select star from a table. So this is the way of doing it in pig. For each record in the bag, generate what? You say okay,
I want only one column, which is passenger ID. So you only want to generate one column passenger ID, that's it. So that's good. You only want one single column. And let's say we load it into the bag B. Yes, generate together is like select star. So I'm pinging this and I'm running this. So my bag B is created. So let's describe B. See, when you describe B, it's only containing the passenger ID, which is of the type integer, nothing else. Perfect. So now this time, guys, we will only dump B and show me all the passenger IDs. So now it's reading this file, guys, and then it will create the bag A. Then from bag A, it will create the bag B and generate the data. So this time it will only display the passenger IDs. That's it. Provided it runs successfully. अभी इसमें कुछ issue आएगा एक. मैं आपको बताऊंगा क्या issue आएगा. But let it run. So it's processing A and B. Yeah. Unable to read data from user cloudera test.csv. प्रगेश अपनी कमांड पिंग कीजिए. राहुल आप भी. नहीं राहुल आप कमांड पिंग कीजिए. नहीं नहीं प्रगेशा, सिर्फ डम कमांड नहीं, मतलब आपकी जितनी भी कमांड्स हैं 3-4 सारी पिंग कीजिए एक साथ. ऐसे तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा. Starting from the load command to the for each to the dump. सब एक साथ पिंग कीजिए. पिंग कीजिए. नहीं नहीं राहुल, ऐसे आपका ए कहाँ है? मुझे ए का भी तो बताओ. गेटिंग इट राहुल? Okay, Pragesha, let me
ठीक है राहुल, आप मुझे वापस स्क्रीन शेयर कर दो, जो मैंने आपको राइट दिया है, प्लीज गिव इट बैक। आपकी कमांड में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ होगा राहुल, वरना ऐसा नहीं होता। ठीक है राहुल, गिव मी द प्रेजेंटर राइट प्लीज। Karan, you are there. Karan, make me the presenter again, please. Meanwhile, guys, others, if they are able to do it, Karan, please make me presenter. Uh, राहुल अग्रवाल को कर दो। हाँ, थैंक यू। Okay, guys, I'm sharing the screen back. Okay. So now what happened here, if you look at, my output is also ready, but I'm not getting anything in the output. If you look at, for each of the passenger ID, I'm just getting blank. Blank, 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 blank. And why so? Let me tell you that. Uh, uh, uh. So guys, if you look at, देखो पिग में जो डिफॉल्ट सेपरेटर होता है वो होता है टैब। पिग में डिफॉल्ट सेपरेटर होता है टैब, लेकिन फाइल जो है वो है कॉमा सेपरेटेड। पिग स्टोरेज
Okay, using pig storage, using pig, I have to here comma, but at the same time I am using pig storage as okay. Another issue, ये जो using clause है, मतलब इस कमांड के बाद कुछ और नहीं दे सकते आप यहाँ पे. So this using वाला जो part है, as which is the schema, successfully. Let me describe it. Okay, describe A. It's still having the same schema, but this time separator is changed. Okay, and now I am saying for each A generate the passenger ID, and then I will say okay dump B. So let it run the map reduce. It will this time give me the proper data instead of blank. So I have pinged you the command. तो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ. सबसे पहले तो फाइल को लोड करना, फिर डेफिनेटली फाइल का सेपरेटर अगर टैब है तो ये लाइन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी जो फाइल है उसमें सेपरेटर टैब की जगह कुछ भी है, मान लो सेमी कॉलन है, कॉलन है, कॉमा है, कुछ भी है, तो वो आपको यहाँ पे बताना पड़ता है. मान लो आपकी फाइल पाइप सेपरेटेड है, तो यहाँ आपको कॉमा की जगह क्या करना पड़ेगा, पाइप ऑपरेटर देना पड़ेगा. इस फाइल में जो भी सेपरेटर है वो आपको यहाँ देना पड़ेगा, अगर फाइल का सेपरेटर टैब के अलावा कुछ भी है. एंड उसके बाद स्कीमा देना तो जरूरी है ही है. उसके बाद वापस से इसको गाइस एक बार क्रिएट कीजिए, बैग ए को, फिर बैग बी को, और फिर बी बैग को डंप कीजिए. So this time guys, if you see my screen, you are getting the data. I hope all of you are now understanding what was the issue earlier and what is the resolution. Anyone, any question? Yes, Tanya, sure. Guys, please try it out. I will be back in 2 minutes. Ping your questions on the chat and we will discuss.
Okay, guys. Anyone, any question? Tanya, is it done for you? Aditi, Bomini, Karan, guys, are you able to follow? Others, what about you guys? Varsha, Nitika, Gulzar. Perfect, perfect. So far we have seen the importance of loading data in FIG, like what are the different ways of doing it. Once we have loaded the data, how to run a select star type of query. Okay. Now we will see what else we can do. So far we were saying like for each A generate passenger ID. Now you also want P class, which is another column, right? So you can generate passenger ID comma P class, which is the passenger class, right? P कैपिटल है मतलब कॉमा वो कॉलम का ध्यान रखना P क्लास. अब यहाँ पर आप कुछ एनालिटिक्स भी कर सकते हो. मान लो हर पैसेंजर की क्लास और आपको उसकी एज भी पता है, राइट? एज. What else we know? So we know their age also. We know their passenger class also. So now passenger class you want to increment by 10. मतलब हर किसी के पैसेंजर क्लास अगर 1 है तो 11 प्रिंट कर दो. मतलब हर किसी में 10 10 10 ऐड कर दो. तो मतलब आप मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकते हो यहाँ पे. You are generating one column as is, another column with some mathematical operation, and then another column as is. Getting it? So let's do that, and then we will dump B. Even before dumping B, I'll describe B, and it will say, okay, I'll contain 3 columns, right? But for second column, it does not know the column name because I have done some mathematical operation. It just know the column type, which is the integer. Okay. हमें आइडियली यहाँ पे एलियास देना चाहिए था इस कॉलम को. So let me do that. Give it an alias as say new P class, and then let's describe the. See, whenever you are using a column and doing some mathematical operation on it, you need to give it a new name, an alias, so that it, see the difference here and here. See the difference? अब अगर यहाँ आप नाम नहीं दोगे तो कल को आप एक्सेस कैसे करोगे आगे उस कॉलम को? तो इसलिए this is important. And now if you want, you can dump B. Guys, please run these queries and let's see the output. Hey Pragesh, I won't be able to help you unless you give me the command. Can you just give me the very first command that you are running? Just ping me the very first command that you are running and dump that A only. Don't go to B.
फर्स्ट जस्ट क्रिएट दिस बैग एंड डंप इट एंड टेल मी कि पहला बैग डंप हो रहा है या नहीं. अगर पहला ही बैग डंप नहीं हो रहा देन इट्स अ प्रॉब्लम. इट्स अ प्रॉब्लम विद द फाइल दैट यू आर ट्राइंग टू रीड. जब पहला लेवल क्लियर हो जाएगा तब आप सेकंड पे जाओ. Okay guys, so I hope you are understanding it, like how to run a select start kind of a query here. What is the role of schema here? You can do filter, group by, everything in Pig. So guys, if you see, you are getting this data. 930, all the passenger class are incremented by 10 because normally Titanic data में तो passenger class 1 2 3 4 ही होती है. यहाँ ये आ गई और जेंडर उनका आ गया मेल फीमेल whatever it is. कुछ तो गड़बड़ हुई है इस डेटा में. गाइस इस डेटा में कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि मैंने एज प्रिंट करवाया था लास्ट कॉलम, लेकिन एज की जगह जेंडर आ रहा है. हम देखते हैं. एज प्रिंट करवाया गया था, जेंडर क्यों आ रहा है? I am just trying to see the order of the data. बस वो एज में जेंडर क्यों आ रहा है? बाकी तो एवरीथिंग इज गुड. हाँ तो प्रगीशा आप मुझे अपना ए वाला कमांड अगर पिंग करेंगे, मुझे लग रहा है उसी में आपने कुछ गड़बड़ किया है. आप मेरा ही वाला कमांड चला रहे हो क्या जो मैंने आपको पिंग किया था? So Pragisha, are you running this command as is? आप चेक करो कहीं ना कहीं आपने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या सॉरी ये वाला नहीं, आपने कहीं ना कहीं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करा होगा या कुछ होगा. दिस वन, वरना ये इशू नहीं आता. ये बाकी लोग भी सेम ही चीज रन कर रहे हैं. देखो गाइस, अब अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बताऊं इशू क्या हुआ. आइडली एज ये था राइट 23 50, लेकिन मेरे को वैल्यू क्या मिल रहा है? मेल फीमेल, उससे एक पहले वाला. कोई आप में से मुझे बता सकता है इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन सामने ही दिख रहा है. कैन एनीवन टेल मी? If you look at the name of that person, it contains comma. The names contains comma, right? So that's the problem. Other than the separator,
even there are certain values which contain the separator. So definitely this problem can also be resolved. There are some ways where we say quoted strings. There are ways of doing this quoted string thing. I'm not doing that right now, but I'm telling you कि हमारे केस में इशू ये हुआ कि कॉमा सेपरेटेड होने की वजह से ये पूरा का पूरा जो तीसरा कॉलम होना चाहिए था उसमें ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, राइट। तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्या हमारे डेटा में सेपरेटर इंक्लूडेड है। अगर ऐसा है तो दैट्स अ गड़बड़, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके भी डायरेक्ट तरीके हैं। कोटेड स्ट्रिंग, तभी ये कोटेड स्ट्रिंग में दिया है इन्होंने जानबूझ के। सो देयर इज अ वे ऑफ रिजॉल्विंग इट। ओके गाइस, किसी को डाउट है इसमें जो मैंने अभी समझाया कि आखिर मुझे वो एज में ये वैल्यू ना देगी, ये वैल्यू क्यों दे रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? Guys, it's fine if you say no, that's not a problem. Okay, Nishtha, Pragisha, okay. So we are not solving it. We are not solving it, but I'm telling you it can be solved directly. There are direct ways. और ये प्रॉब्लम हाइव में भी आती है, ठीक है। इस डेटा को अगर हम हाइव में भी लोड करेंगे तो सेम प्रॉब्लम आएगी। तो उसको सॉल्व करने का सेम तरीका ही है हाइव में भी, कि इस तरह के कॉलम्स को हम कोटेड स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो गुलजार मैं बस इतना कह रहा हूँ कि एक्चुअली ये पूरा का पूरा वैल्यू आपका थर्ड कॉलम था, बट बिकॉज इस वैल्यू के अंदर भी एक कॉमा आ गया तो उसने इसको थर्ड और फोर्थ दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस वन इज फोर्थ, बिकॉज इट कंटेन्स अ कॉमा। आइडियली ये पूरा का पूरा आपका थर्ड कॉलम था, तो ये सब केसेस में हो रहा है। तो देयर आर वेज ऑफ सॉल्विंग दिस। इट्स द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम गुलजार, पैसेंजर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ओके तो सर वो तो ठीक है, पर जो एज के साथ साथ जो बाकी, हाँ बाकी जानकारियां हमें तो पता है ना गुलजार ऑलरेडी। अगर मैं डिस्क्राइब करूं, डिस्क्राइब ए, तो बाकी जानकारियां मुझे पता है क्या है। इट्स लाइक द टिकट नंबर, द फेयर, द कैबिन, एम्बार्क्ड, ये सारे कॉलम्स है ना, बाकी सारे वैल्यूज। ओके गुलजार, इज इट फाइन? You can describe the bag, right? Okay. So guys, we have so far seen all these things like uh, even the analytics on a bag, how to do certain analytics on a bag. Now we have the bag B. We have a bag B also, which contains the data. Now, let's say I want to put a filter condition where I say that only show me the data where gender is male or say gender is female. So that means I need to put a filter condition. So for that, what I need to do, I need to first know my bag. So I am describing say B. So B contains everything. So I am saying, let's create a bag C from the bag B, and we'll say filter B by, we are saying filter B by, now let's say age. I'm saying where age is greater than 20, for example. Show me only that data where age is greater than 20. There is an error. Huh? देखो इनकम्पैटिबल टाइप, एज ग्रेटर देन 20 मैंने बोला, लेकिन एज जो है वो मैंने किस टाइप की बनाई हुई है यहाँ पे, स्ट्रिंग। एज को स्ट्रिंग टाइप का बनाया हुआ है, स्ट्रिंग को आप ग्रेटर देन लेस देन तो कर ही नहीं सकते, तो गड़बड़ हो गई। आप उस गड़बड़ को कैसे सॉल्व करें?
I can try to do some casting here. I'll try to cast this into integer. Okay, it's not taking that. So let me do something else. What I did this right. Paste. ओके डन। यहाँ थोड़ा सा फर्क हो जाता है, जब हम कास्टिंग करते हैं इंट एज इस तरह से ना करके इंट ब्रैकेट में लिख के फिर एज, मतलब ये वाला सिंटेक्स नहीं चलता है, यहाँ ये वाला सिंटेक्स चलता है, थोड़ा सा फर्क है कास्टिंग में। तो अब अगर मैं डंप करता हूँ सी को, सो आई एम सेंडिंग यू दिस क्वेरी एंड आई एम डंपिंग सी। So guys, pig is very easy. You can write English like commands and it's done. But remember, every time you have to create a new bag. और ये बैग कहीं पे परसिस्ट नहीं होता, मतलब जैसे हाइव के टेबल तो परसिस्ट हो जाते हैं ना परमानेंटली, ये बैग सिर्फ जब तक आपका सेशन है उतनी देर तक ही रहते हैं। ये ए बी सी जितने भी बैग्स हैं, उसके बाद ये लॉस्ट हो जाएंगे। अगर इन बैग का डेटा आपको सेव करना है तो आपको स्टोर कमांड चला के स्टोर करना पड़ेगा, जो हमने शुरू में चलाई थी। तो गाइज you can filter a bag, you can group a bag, you can do multiple things. There are very straightforward commands. So please try to run this filter command. And इसमें मैंने बस age को कास्ट किया इंटीजर में, क्योंकि वो स्ट्रिंग टाइप का था, उस पर मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता था ग्रेटर देन लेस देन वाली। ठीक है गाइज, प्लीज let me know if you are able to understand it and run it. I'll wait for 5 minutes. तो हमने ये कास्टिंग क्यों की और फिल्टरिंग में मैं क्या कर रहा हूँ, तो प्लीज अंडरस्टैंड इट। अनिष्ठा एक बार बस ये चला लो, फिर आई विल गिव अ ब्रेक। देखो मेरी सिस्टम ये सक्सेसफुली सब कंप्लीट हो गया, मैप रिड्यूस सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई, बट उसमें एक वार्निंग आ गया, फील्ड डिस्कार्डेड दी टाइप कन्वर्जन फेल्ड। So some type conversion actually failed here, due to which I am not getting anything in the output. So I'm checking it. So we were actually doing this, right? At least another half an hour, Ritika. So what we will do, guys, here to solve this problem, because filter is not working properly, while creating the bag B, I should do the casting. Okay. So what I mean to say by that is, when I'm creating the bag B,
See, when I'm creating the bag B, I'll do this, right? I'll do this. I'll say कि भैया बी बैग बनाते समय होगी, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। अब इससे फायदा ये होगा कि अब मेरा वो जो फिल्टरिंग है वो सही से काम कर जाएगा। अब मुझे यहाँ पे कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो मैंने क्या किया? मैं बी जब बना रहा हूं तभी मैंने अपनी जो गलती थी वो सुधार दी कि एज जो है वो स्ट्रिंग ना लेके इंटीजर का लोड कर दो इसमें बैग में। उसके बाद मैं इस बैग पे सीधा सीधा फिल्टरिंग लगा दूंगा। डन। अब मैं जब डंप करूंगा सी को, इसमें देखो एज इंटीजर टाइप का आ गया। तो अब मैं इसको अगर डंप करूं सी को, मैंने आपको सारी कमांड्स पिन कर दी है एक साथ। तो डंप सी, अब देखते हैं वो फिल्टरिंग सही से काम करता है कि नहीं। तो बहुत से तरीके हैं एक ही चीज को करने के। द ओनली पॉइंट इज यू शुड गेट टू द आंसर। So guys, we will take a 15 minutes break, or rather 13 minutes break. We will connect at 6:10. Till then you run this filter वाला part in दो अलग अलग तरीके से जो मैंने बताया. Please do this and then we will connect at 6:10. Any questions you have, we will answer at that time. Okay guys, I'll be back in a while.
Okay, guys, I'm back. Please let me know anyone facing any issues, or is it fine? Are you able to run it, check the data? Okay, I'm all again getting this right. Field discarded, type conversion failed. Okay. Okay, type conversion failed. That's fine. Leave it. Schema tuple will not generate. That's fine. No problem. Okay. So guys, anyone any question? Guys, am I audible? Yes or no? Let me do some other filter. Oh, okay. Okay, Pravisha. Working fine. That's good. ओके सो अच्छा, हमने एक चीज तो मिस कर दी ना, यहाँ हमारा तो डेटा ही स्प्लिट हो जा रहा है। एज में न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ा ही है, एज में तो मेल फीमेल वाला डेटा पहुंचा हुआ है, रिमेम्बर, तो इसीलिए शायद वो हमें कोई डेटा नहीं दे रहा है, यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक डेटा आ रहा है। ये तो सिर्फ एक वार्निंग है, बट यहाँ डेटा जीरो रिकॉर्ड इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कुछ मैच ही नहीं हुआ। गेटिंग इट गाइस? यहाँ एज में रादर आई शुड हैव पुट इन I should have put in, say, male equal to or double equal to. Copy. गाइस, कोई आप में से फिल्टर चला पाया है? प्लीज लेट मी नो। सो देखो, हमें करना क्या है, एज इक्वल टू में यहाँ डबल इक्वल टू लगाना होगा, वो सिंगल इक्वल टू नहीं समझता। एज डबल इक्वल टू मेल और फीमेल, एक्चुअली ये हमें करना पड़ेगा, बिकॉज आई शोड यू राइट एट द टॉप हमारा डेटा स्प्लिट क्यों हो रहा है। इफ यू लुक हियर, आइडियली एज में ये वाली वैल्यू आनी चाहिए थी 19 20 30, लेकिन हमारा डेटा अभी के लिए इसकी वजह से सही से स्प्लिट नहीं हो रहा, तो एज में मेल फीमेल की वैल्यूज जा रही हैं। तो इसलिए मैंने फॉर द टाइम बीइंग आई एम सेइंग फिल्टर दिस बाय एज इक्वल टू मेल, मतलब जहां जहां एज सिर्फ मेल है वही डेटा मुझे डंप करके दो। गाइज, आर यू गेटिंग इट कि मैंने एज को न्यूमेरिकल से कंपेयर ना करके मेल फीमेल से क्यों कंपेयर किया है? इज इट क्लियर और नॉट? गाइस, प्लीज डू लेट मी नो इफ इट इज क्लियर और नॉट। एज को मैंने नंबर से, ओके करण, थैंक्स अलॉट। और पहले डेटा क्यों नहीं आ रहा था? बिकॉज एज में वो मेल फीमेल ही थी और हम ग्रेटर देन 20 चेक कर रहे थे, तो उसे कोई डेटा मिल ही नहीं रहा था। ठीक है, तो लेट इट रन। So with this we will okay Gulzar, so with this we will end the pig here, मतलब और प्रैक्टिस करो।
we will work on Hive also in the next class, but मेरा point यही है, Hive में अपना सारा SQL practice कर लो, Pig में ये सब आप filter वगैरह group by वगैरह practice करो. Please try all these different queries. तो मैंने आप लोगों को ये भी पिन कर दिया क्वेरी, फिल्टर बाय एज डबल इक्वल टू मेल. ओके, ये डबल कोट्स की जगह सिंगल कोट दे देना. मतलब मैंने आपको 2 कमांड पिन की हैं, अगर पहली वाली ना चले तो दूसरी वाली चला लेना. कई बार डबल कोट्स को नहीं समझता, वो सिंगल कोट ही चाहिए होती है उसको. ठीक है, और डबल इक्वल टू लगाना है आपको, और एज हमने क्यों यहाँ किया है हमें पता है. देखो गाइज, अब आप देखेंगे आपका डेटा आ गया है यहाँ. सारा जो डेटा आया है आपके पास सिर्फ मेल्स का आया है. सी, हमने बोला था फिल्टर दिस वेयर एज इज मेल. ओके, एज इज मेल. तो अब एज हमारा कॉलम का नाम है, बट वैल्यूज उसमें मेल फीमेल पड़ी है. ठीक है, अब गुलजार देखो, आइडियली तो आप सिंगल कोट डबल कोट कोई भी यूज कर सकते हो. इट इज सिंपली द लिमिटेशन ऑफ द टूल. ओके गुलजार, कुछ टूल्स आपको सिंगल कोट्स ही अलाउ करते हैं, डबल कोट्स नहीं करते. तो एज सच उसका कोई रूल नहीं है. इट इज स्पेसिफिक फ्रॉम टूल टू टूल. हाइव में आप सिंगल कोट डबल कोट कुछ भी यूज करो, एक ही बात है, बट पिग में ऐसा नहीं है. ठीक है, पिग आपको कहता है कि सिंगल कोट ही चाहिए, उसको डबल कोट नहीं चाहिए. ओके, so this was about pig guys, and this is the grunt shell of the pig. गुलजार, ये आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा कि जैसे पाइथन में होता है, आप पाइथन में स्ट्रिंग बनाते हो तो आप सिंगल कोट डबल कोट कैसे भी बना सकते हो, लेकिन कुछ टूल्स ऐसे हैं जो आपको कहेंगे कि नहीं नहीं सिर्फ डबल कोट ही अलाउड है या सिंगल कोट ही अलाउड है. तो ये तो आपकी एक्सपीरियंस पे आपको पता लगेगा. ठीक है गुलजार, बट आइडली 90% ऑफ द टाइम और 99% ऑफ द टाइम जहां सिंगल कोट्स हैं वहां डबल कोट्स भी अलाउड होते हैं, और वाइस वर्सा. ठीक है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. तो गाइज प्लीज प्रैक्टिस मोर अबाउट पिग फ्रॉम द लिंक आई शेयर्ड यस्टरडे. कंट्रोल सी करके बाहर निकल जाओ, या कंट्रोल जेड से बाहर निकल जाओ. आप कंट्रोल जेड करके बाहर निकल जाओ, दैट इज फाइन. So now so far guys we have done with the Linux, we have done then with the HDFS commands, or the HDFS commands, Linux commands and the HDFS commands, then the Hive. Okay, then we have done with the Hive. Okay, then we are done with the Impala, then we are done with the scoop import, not export. So I request you to try scoop exports at least, then I will tell you if you need. Then we did some basic stuff in the pig today, reading, writing files, running certain queries, filtering the data, type conversions, right? So this was about it. But now in the next 20 minutes or 15 minutes, I'll introduce you to one more tool, okay, which is very, very important. So now what we are going to see is NoSQL database, guys. Like Hive or Impala is a SQL database, we have NoSQL databases. Okay, and in Hadoop by default the NoSQL database that we get is HBase. That is HBase. So if you have to enter inside HBase, you just type HBase shell and press enter. Just do this guys, HBase space shell and enter. This is the way to access HBase. Okay, so NoSQL databases is very important in today's world, the most important thing. आप लोगों ने MongoDB, Cassandra, Couchbase, DynamoDB ये सब सुने होंगे, ये सब NoSQL databases ही हैं. तो HBase
और Hadoop database like HBase और Hadoop database जिसको हम कहते हैं, yeah Vipul. So HBase is one of the NoSQL databases or NoSQL database. So this is where I am inside a NoSQL database. If I type in the list command, it's like show tables command. It show me all the tables inside HBase. Currently there is no table. I'll create it anyways later. Create table employee. Whatever. So I'll tell you that commands in a while, but I'm inside the HBase. I'm running the list commands. I'm creating the table. There are like multiple things we can do. We can create the table. We can insert the data. Okay. But now the question is, before we learn even HBase or any NoSQL database, why we need a NoSQL database? That's the more important thing. जब Hive है हमारे पास, तो हमें HBase या MongoDB की जरूरत पड़ी क्यों? देखो पिग तो कोई स्टोरेज इंजन है ही नहीं, वो तो सिर्फ प्रोसेसिंग इंजन है। स्टोरेज इंजन तो हाइव और इम्पाला है जो डेटा स्टोर करते हैं टेबल्स की फॉर्म में। तो सिमिलरली एचबेस भी एक स्टोरेज लेयर है जो टेबल की फॉर्म में आपका डेटा स्टोर करता है। लेकिन हाइव के टेबल और एचबेस के टेबल्स में फर्क है। वो क्या फर्क है, हमें वो समझना होगा। तो इफ यू लुक एट माई स्क्रीन, normally if I talk about a hive table, if you want to say it contains say multiple records. First of all, hive is not for updates. Hive is not meant for updates. Hive is meant for insert. मतलब अगर ये राहुल का डेटा है और आपको राहुल का यहाँ पर एड्रेस चेंज करना है, hive is not meant for it. You have to create a new entry for Rahul with new address. You should not update the older entry. That's the problem with Hive. Hive is not meant for updates. So that problem is solved by NoSQL databases like HBase, where if you want to update any record, you can do it very frequently and very easily. That's the one thing. Second point is, if say there are millions of records and you want to access one particular record, there are millions of records, you want to access one particular record, right? So in Hive, it is very slow to access specific records because it do a sequential read, step by step read. उसको सॉल्व करने के लिए हम पार्टीशनिंग बकेटिंग कर सकते हैं, बट उससे भी इतना फायदा नहीं होता। जबकि एक NoSQL डेटाबेस में if you want to read any record, it is like you can directly jump and read it. You don't need to read sequentially other records. You can immediately point to that record, read it, update it, whatever you want to do, and come out. Getting it, guys? So Rahul, you are getting the zookeeper error. Definitely, that's a known issue. HBase cannot work without zookeeper. So your zookeeper is having problem. So there is a command you can use to start the zookeeper, and then HBase will work. Okay. So if you Google this error, you will get that command that you are getting error while zookeeper error while starting HBase. You will get the solution. So that's a known thing. 1 second, guys. Hello. Yes.
Okay. It immediately points the required record out of the database, unlike Hive, which runs sequentially at the rate current. Okay. Karan, did you get what Vipul said? Perfect. There are more benefits of NoSQL. We will talk about that definitely. Okay. Coming back to this thing. Okay. This so keep yeah. Okay. So Z node null. So this is a very much known problem, Rahul. Guys, few of you when access HBase, they will get a zookeeper error, where zookeeper's node, known as that node, it gives you null value. So there is a solution for that. It's a known solution. You have to restart the zookeeper with one very small command. So there are multiple people suggesting multiple things. I'm looking at that particular command. 1 second. एक बार तो आप ये ट्राई करके देख लो राहुल. Stop HBase and start HBase, but there is one more command other than this. वो मैं आपको पिंग कर दूंगा. बट आप पहले ये दो कमांड चलाकर देखो कि पहले आप HBase को प्रॉपरली स्टॉप कर दो, ठीक है, और जब वो स्टॉप हो जाएगा उसको दोबारा रीस्टार्ट करो. रन दीज टू कमांड्स वन आफ्टर अनदर. Stop the HBase and start the HBase. But if they don't run, there is one more command which is to restart the zookeeper. We can definitely do that. Yeah, I think this is the command. See, don't do that. Rather do this. Okay, let me ping you. Rahul and others, this is the command, guys. This is the command, but how to run this command, that's a different thing. Why? Because if you look at, first of all, it's asking you HBase home, but you don't know what is the HBase home, right? So you need to first of all find where this HBase daemons.sh file is. So there is a command known as find HBase. हमें पहले ये ढूंढना होगा कि HBase daemons की फाइल होती कहां पर है. ओके, तो मैं फाइंड कमांड से उसको फाइंड कर रहा हूं. इसको नहीं मिली. ओके, फाइंड से नहीं मिली. There is one more command which is locate. So using locate command, I am trying to locate this file. It's not located. Locate HBase. तो गाइस देखो, मैंने आपको जो कमांड्स पिंग किए हैं ना, वो शेल स्क्रिप्ट्स हैं. स्टॉप HBase, स्टार्ट HBase. तो ये शेल स्क्रिप्ट्स जब तक आप लोकेट नहीं करोगे आप इनको रन नहीं कर सकते. मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आप सीधा सीधा ऐसे करोगे कि भाई stop HBase .sh, so it will not run, right? Because it's command not found, or it won't be able to find this particular command, right? Like copy this, paste it. So it's not able to run this command. Okay, how to run shell scripts, guys? If you have to run a shell script, you have to say sh space
लाइक दिस। कभी भी मैं आपको बोलता हूं कि ये शेल स्क्रिप्ट फाइल है, .sh मतलब शेल स्क्रिप्ट फाइल है, इसको रन करने का तरीका होता है sh स्पेस फाइल का नाम। लेकिन ये फाइल नहीं रन हो रही क्योंकि ये फाइल मिल ही नहीं रही। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इस फाइल को लोकेट करना पड़ेगा कि आखिर ये फाइल है कहाँ पे, और वहां पर जाकर ये रन करनी पड़ेगी। अब ये मिल ही नहीं रही, तो इस प्रॉब्लम को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम मैनुअली ढूंढेंगे इसे। मैं लिनक्स के सिस्टम में बिन में जाऊंगा, बिन में मैं हडूप ढूंढूंगा यहाँ, और वो उस पाथ तक मुझे जाना होगा। If you want to avoid this, you can say Hadoop home in Cloudera. If you don't want to search that path, you can ask Google to tell you the exact path. Okay. Rahul, you can look for it. You will get that. So my point is, these are the commands. You first need to locate कि ये फाइल्स पड़ी कहाँ है सिस्टम में। जब तक आपको ये नहीं पता होगा ये फाइल सिस्टम में पड़ी कहाँ है, आप इन फाइल्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, चाहे वो डीमेंस की फाइल हो जो मैंने आपको भेजी है, या वो स्टार्ट स्टॉप एचबीएस की फाइल्स हो। I'm just trying to search or locate that particular path. User lib HBase cd user cd label HBase. Okay, so yeah, I got the path. So this is the path. In user library there is a HBase folder. So inside this there is this bin folder. So I'm going inside the bin folder and ls. So here you will get those files. Yeah. So Rahul, if you look at, you have these files, right? Start HBase, stop HBase, HBase daemon.sh. So let me run this. Okay, I'm pasting this command here. I am saying first of all stop zookeeper. Okay, I'm stopping the zookeeper first. So राहुल, जो कमांड मैंने आपको पिंग की है सबसे लास्ट में वो यही है कि आप इस पाथ तक पहुंच जाओ पहले, और वहां पर hbase daemon.sh की कमांड चलाओ, ये daemon की, and stop the zookeeper first. Command not found. Okay, I told you because it's a shell script, you have to run shell script like sh space, so sh space this stop zookeeper and enter. So I ran this command, it's saying no zookeeper to stop because no PID or file or this or this. So it's not asking me or not doing that for me. So Rahul, what you need to do? PWD. So guys, for all of you,
Who face this problem? So Rahul, I pinged you that you have to go to this path first, and then you have to run this command first to stop the zookeeper, and after that, Rahul, you have to start the zookeeper, and then try to access edge base. If it still does not work, Rahul, then there are other ways also. Like you have this thing, right? So let's try to read this file, cat. So .cmd जो है वो विंडोज की कमांड्स हैं, हमें तो .sh यूज कर रहे हैं वैसे. So Rahul, please try that .sh wala commands if that runs and let me know. And even for all others also, you have to go to this HBase bin and try to restart the zookeeper. Then your HBase should work. But if you try to run this command from anywhere else, it will fail. So it is starting zookeeper, logging this, daemon this, permission denied. Okay. So guys, whenever you are running a command in Linux and you get permission denied, you have to run that command with the super user by prefixing sudo there. देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको कभी भी कोई शेल स्क्रिप्ट अगर रन करनी है तो sh स्पेस शेल स्क्रिप्ट का नाम और फिर जो भी एट्रीब्यूट्स है. बट अगर आपको परमिशन डिनाइड की प्रॉब्लम आई, मतलब कि आपके यूजर को, क्लाउडेरा को उस काम को करने का एक्सेस नहीं है, सिर्फ एडमिन यूजर ये काम कर सकता है, तो हम ये कैसे कर सकते हैं? हम sudo लिखेंगे, उसके बाद हम जो कमांड चलाएंगे वो एडमिन यूजर से चल जाएगी. तो ये मेरी कमांड चल गई यहाँ पे, ठीक है. अब उसमें भी एक पर्टिकुलर एरर है कि जावा होम इज नॉट सेट एंड जावा कुड नॉट बी फाउंड. मतलब मुझे इस मशीन में जावा इंस्टॉल करने को बोल रहा है वो, रिक्वायर जावा 1.7 और लेटर. दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आई कैन डू दैट सेपरेटली. But what you have to do is, first of all, go till this path, run this command to stop the zookeeper first, and then start the zookeeper. If it gives you permission denied error, you run it with the sudo user. But if you still get this Java home issue, you can leave it for the time being. Rahul, can you let me know if you are able to do it? Guys, even it's for everyone. Please try out these commands. Change your directory. Run the zookeeper ka stop command and a start command. Please do that. It may not run, which is fine. You guys will land up to this point. But I want you all to run this. Even if it corrupts your edge base, it's fine. I want you to run this. And ping me if you are able to reach till this point. So whenever you try to access edge base, sometimes it fails, which is perfectly fine. Because of zookeeper it fails, so we have to restart zookeeper from edge base, and I have pinged you those commands and from where to execute them. Hello, Rahul. Alok this side. Yes, hello. Tell me. Yeah, hi. How are things? You Anji, okay now? Anji, Everything Anji, fine? yeah, things are better now. Going okay.
Okay, okay. So good to know. Rahul, I needed to have a word with you regarding today ना placement information था इन लोगों का हाँ जी, हाँ जी। of this batch and अभी मेरे को थोड़ा सा टाइमलाइन का आइडिया देंगे ऐसा आई नो इन लोगों का हार्डली 1 महीने का अभी काम बाकी है Is it so या और भी कुछ है नहीं नहीं, मतलब 1 month is more than enough. We have only few topics, but yeah, 1 month में हो जाएगा Hadoop पूरा इनका। 1 month for Hadoop तो 1 month से पहले ही हो जाएगा। I would say 2-3 weeks, but because I am also running on and off right now, थोड़ा classes में, तो इसलिए वो थोड़ा डिले हो रहा है। बट एक महीना नॉट एन इशू जस्ट आई नीडेड टू नो द टाइमलाइन तो हाँ मैं मान के चल रहा हूँ मिड फेब तक ये मिड जनवरी तक इनका हडूप कंप्लीट हो जाएगा हाँ जी हो जाएगा। ओके ओके ऑल गुड अच्छा अदर देन दिस देयर वाज दिस थिंग केम अप दैट इनका पाइथन में जो प्रोजेक्ट्स हैं एलएमएस एक्सेस है आपके पास राहुल हाँ है मेरे पास एक्सेस। अच्छा तो उसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स इनको कराए हैं या कराने हैं या क्या सिनेरियो है उसका नहीं, मैंने अभी एलएमएस में से कोई प्रोजेक्ट नहीं करवाया इनको, और आज कुछ लोग पूछ भी रहे थे तो वो मैं करा दूंगा। बट मैं मतलब माय पॉइंट इज कि आई आस्क देम टू फर्स्ट डू इट इंस्टेड ऑफ मी टेलिंग देम फ्रॉम स्क्रैच, एंड देन आई हैव टू टेक देयर मशीन लर्निंग सेशन व्हिच आई डोंट डिस्कस विद देम इन दिस सेशंस। मुझे इनके 1 या 2 सेशंस लेने हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर, नॉट ऑन द टॉपिक्स बट ऑन द प्रोजेक्ट्स, end-to-end projects, 1 or 2 classes only on the projects। तो उसमें मैं वो LMS के भी ले सकता हूँ या फिर कुछ और प्रोजेक्ट्स उठा सकता हूँ, whichever ways these guys want। but yes, वो मुझे करना है अभी इनको 1-2 क्लासेस। ओके ओके ठीक है द थिंग इज बिकॉज इनका प्लेसमेंट इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा जनवरी ऑनवर्ड आई मीन मॉक इंटरव्यू रेज्यूमे बिल्डिंग दिस काइंड ऑफ थिंग हाँ जी दे विल बी ऑन टू दैट इनका प्रिपरेशन चालू हो सो दैट जैसे करिकुलम खत्म होता है दे स्टार्ट अप्लाइंग हाँ मॉक्स वगैरह के लिए जैसे मॉक इंटरव्यू लेते हैं तो देर आर एसएमई दे आर एक्सटर्नल ट्रेनर्स तो उस समय तक इनके कुछ प्रोजेक्ट्स इनके दे शुड बी अंडर देयर बेल्ट जिसके बारे में वो बात करेंगे रिज्यूमे पे लिखेंगे ये करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मैं अभी मतलब हडूप के बीच में इनको एक बार कुछ टॉपिक्स हो जाए हडूप के में, मैं इनको एक सेशन दे दूंगा के बीच में हाँ बट स्किप नहीं होना चाहिए बिकॉज ये प्रोजेक्ट्स जैसे द करिकुलम तो ये हो जाना चाहिए तो मे बी टाइमिंग आप देख लेना पहले हडूप करना चाहते हो पहले हडूप खत्म कर लो एंड एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल तो मे बी यू गाइस कैन आल्सो बी वोकल अबाउट दिस तो ये कैसे कवर करना है नहीं, बट मेरा पॉइंट यही है कि मैंने इन लोगों को पहले भी बोला हुआ है कि पहले अपने सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने क्लास में पढ़ाए हैं सब वापस से रिवाइज कर लो, उसके बाद ही मैं इनको प्रोजेक्ट कराऊं तो उसका फायदा है, नहीं तो वो बड़ा रश में चीजें जाती हैं क्लासेस में तो वो फिर कैच अप नहीं हो पाती। तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है सबसे कि अपना मशीन लर्निंग सब रिफ्रेश कर लें, देन वो तो ठीक है रिकॉर्डिंग ऑफ करना भेज रहे हैं perfect। So so keeping this apart, this project thing guys, we will talk about it again later। yeah but coming back to this big data thing, so all of you are up till this place like where you are getting the same error as me? Okay Rahul, perfect। so that's fine, means this will not help you to start HBase definitely, but this is the way to do it। I'll further help you like in this। you can try to access HBase again, or sometimes if you restart the virtual machine it works। Okay Rahul? Okay guys, so we know that how to start some of the services in Zookeeper or HBase,
now I'm going back to the HBase thing. So guys, when we talk about NoSQL, there are multiple kind of NoSQL databases in the market. Okay, multiple NoSQL databases are available. So if you look at, you have MongoDB, you have Cassandra, Elasticsearch, Couchbase, right? Lot of NoSQL databases. But now the point is कि NoSQL database की categories क्या क्या हैं. तो NoSQL databases जो होते हैं वो कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं. अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें, SQL databases are relational databases, right? रो बाय रो डेटा स्टोर्ड होता है, कॉलम्स होते हैं उसमें, right? We already know that. But NoSQL databases are of three kind. Key value pair, you have the key value pair, you have the column family, you have the document oriented and the graph based. तो अगर मैं HBase, MongoDB इन सब की बात करूं तो वो इन्हीं में से किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करेंगे. Okay, so NoSQL databases mainly are of four kinds. Key value, ये बहुत छोटे छोटे डेटाबेस होते हैं, इनमें ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते आप. सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कॉलम फैमिली. तो आपका जो HBase है वो एक कॉलम फैमिली डेटाबेस में आता है गाइस. HBase is a column family database, NoSQL database. MongoDB is a document database. MongoDB is a document database. Neo4j is a graph database. Neo4j. So there are different kinds of NoSQL databases available in the market. I am saying Neo4j. So Neo4j is a graph database. It stores information like this. तो अगर आपको Facebook या LinkedIn का डेटा स्टोर करना है कि राहुल is linked to अजय, अजय is linked to आकाश, so in such cases you need graph database. Okay, LinkedIn's data is stored in graph database like Neo4j. Facebook also uses this. Okay. So what I want to tell you is there are multiple NoSQL databases available in the market. Okay. If you look at NoSQL databases, they have faster performances. As I told you, they are not doing sequential reads and writes, they are doing random reads and writes, right? So again, कभी भी आप पढ़ेंगे तो NoSQL databases आपको चार तरह के मिलेंगे. Key value, which are for smaller amount of data, column family, document based, and the graph databases. Okay, so what we are going to talk about is column family, which is HBase. So we are going to talk about HBase. So if you look at HBase, like we will talk about this in detail next class. But guys, this thing, Zookeeper, right? If you see, Rahul, specifically you. So the architecture of Zookeeper, the architecture of HBase contains Zookeeper. Huh? Zookeeper is very, very important for HBase. So Zookeeper makes sure that HBase is up and running, or you are able to access HBase or not. So if the communication between the Zookeeper and HBase is broken, you cannot access HBase shell. Okay. So that's why आपका Zookeeper और HBase का connection broken है राहुल, तो उसको restart करके वो सही हो जाता है. So guys, in the next class, I will explain you this architecture, the HBase architecture.
it's something we have to look in detail. Okay, so it's taking time to start, so I'll just wind up today's session. So guys, I'll just wind up today's session where we worked on pig and like what are different commands in pig, and I request you to please practice more of them. Okay, and then we talked about the HBase, like HBase as a NoSQL database, how to access it, what is the role of Zookeeper in it. We will talk about it in detail, the architecture in detail. Then we talked about how to start and stop the Zookeeper services using the HBase daemon. So this is a shell script. What is the role of sudo command if you get permission denied anytime? Okay. So please read about different kinds of NoSQL databases, and in the next class I will explain you about HBase, which is a column family NoSQL database. So guys, anyone any question before this we wind up the session on HBase or anything? Yes, Gulzar, go ahead. सर आपने मेमोरी का जो बताया था क्लाउडेरा का, एक बार वो कंफर्म, आपने 8 GB बताया था ना? 8 GB तो आपका रैम होना चाहिए लैपटॉप पे मिनिमम, लेकिन अगर आपके पास 8 GB ही रैम है तो आप क्लाउडेरा को 7 GB या उससे ज्यादा नहीं दे सकते। क्लाउडेरा तो कम ही देना जितना आपके सिस्टम में अवेलेबल है उससे। सर क्लाउडेरा को कितना चाहिए होगा? मिनिमम आप 6.5 GB दे दो। मींस कि जिससे कि वो ज्यादा स्लो ना हो, उसके लिए पूछ रहा हूँ। नहीं, आपके सिस्टम पे कितना रैम है? सर वो तो 8 रैम, 8 रैम है ना, तो आप 6.5 दे दो उसको। मैं 7.89 तो यूजेबल बता रहा है उसको। नहीं 7.89 तो दे नहीं सकते ना, क्योंकि सिस्टम को भी तो कुछ मेमोरी चाहिए होती है ना। तो आप क्या करो, 7 या 6.5 ही दो। हाँ, तो 7 तो नहीं दूं? नहीं 7 से भी थोड़ा कम ही दो। मतलब 6.5 पे वो अच्छी खासी स्पीड पकड़ सकता है? हाँ, बिल्कुल। ठीक है सर। ऐसे चलेगा जैसा मेरा मशीन पे चल रहा है, थोड़ा बीच में हैंग होता है, बट इट रन्स फाइन। ठीक है सर। Okay guys, thanks a lot. Please read more about pig and HBase or NoSQL databases, and we will connect on Monday and we'll talk more about HBase on Monday. And NoSQL databases are very important, huh? So please practice that. We will do that. Okay guys, thanks a lot. Thank you.